Class 6 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 2, that is the our environment, and that is the question answer. So let us start. What will be your chapter? How beautiful your environment. ये कितना अच्छा environment है, और इस environment में जो है आपको फूड चेन और फूड वेब दोनों बनाने हैं. Who is depend on which? कौन किस पर डिपेंड है ये बताना है. चलिए देखते हैं. पहले इसमें सबसे पहले ये algae का फिगर दिखाई दे रही है आपको. ये algae है, फिर इसके बाद ये फिश है, और ये मैन है, और ये लॉयन है. इन दोनों में रिलेशनशिप है कि algae is eaten by fish and fish is eaten by man and is eaten by lion. So that is the food chain. इसको हम food chain कहते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है algae जो है एरो करके fish दिखाया गया है, फिर fish को एरो दिखाया ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग से एरो दिखाई दे रहा है lion. तो ये क्या चीज है हमारे पास? फूड चेन है. तो फूड चेन ऐसे बनाते हैं. अब नंबर ऑफ फूड चेन अगर कंबाइन कर दें तो फूड वेब बन जाता है. चलो देखते हैं फूड वेब में कैसे है. ये algae है, पहले algae दिखाई दे रहा है, फिर algae is eaten by fish and fish is eaten by human being. लेकिन algae is eaten by some small insects and small insects eaten by birds and birds eaten by the vulture. Similarly, small insects is eaten by frog and frog is eaten by snake and snake is eaten by vulture. And here is fish is eaten by frog and frog snake. इस तरह करके जो है बहुत सारे अगर कंबाइन कर देते हैं फूड चेन को तो इट फॉर्म फूड वेव. तो फूड वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन. यहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिखाया हुआ है. तो यहाँ पर पानी कलेक्ट कर लेते हैं, वाटर जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है रूफ पे जो पानी कलेक्ट होता है इसको पाइप के थ्रू यहाँ अंडरग्राउंड वाटर पे ले जाते हैं और यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगा होता है और ये हमारे काम में आ जाता है. तो इस तरह से हम रूफ टॉप ऑफ रेन हार्वेस्टिंग करते हैं. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें. लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टुगेदर फॉर्म द एनवायरनमेंट. मतलब एनवायरनमेंट में एक तो लिविंग होते हैं एंड दूसरा नॉन लिविंग, दोनों मिल करके एक साथ जो रहते हैं इसी को हम कहते हैं एनवायरनमेंट. तो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन द एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर एंड सोयल आर द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के जो है नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट, लाइट है, टेम्परेचर, इसमें क्या लिविंग थिंग्स नहीं होती. वाटर, एयर एंड सोयल. नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. प्लांट में भी जान होती है, एनिमल में भी जान होती है, तो दे आर लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नाउ living and non-living are the components depends on each other for food, shelter and the protection. इस तरह से ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स फॉर्म द फूड चेन. ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मिलकर के फूड चेन बनाते हैं. पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड लैंड एंड शार्प साउंड पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट. ये सारे पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को. बाय चेकिंग द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ट्री प्लांटेशंस एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, अ बैलेंस इज मेंटेन इन नेचर. ये हमेशा नेचर को बैलेंस करके रखती है. एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लड while the lack of it for the long period may cause drought. Using the living organism mention the make at least 3 food chain. फूड चेन बनाना है. ग्रास है, लॉयन है, काउ है, स्मॉल फिश है, वुल्फ है, फॉक्स है, पीकॉक है, वल्चर है, काइट है, क्रो है, फ्रॉग है, बेटलेस है, और जो प्लैंक्टन्स है और बिग फिशेस है, क्रेन है, स्नेक है, और मैंगोज और आल्गे, ग्रीन प्लांट्स. ये सारे दिए हैं, इनसे बनाना है. तो ये आंसर आपका फूड चेन बना रहे हैं. पहले ग्रास है इटन बाय विच इज इटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग इज इटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज इटन बाय पीकॉक. ये सेकंड चेन भी बना के दिखा रखी है फूड चेन. ये आल्गे हो गया. आल्गे जो है कौन सा है? जूप्लांक्टन्स. फिर ये स्मॉल फिश आ जाती है, फिर बिग फिश आती है, और फिर क्रेन आती है. कंप्लीट द फूड चेन. इस चेन को कंप्लीट करना है. तो इसमें क्या है? पहले देखो ग्रीन है, ग्रीन ग्रास है. ग्रीन ग्रास को कौन खाता है? टिड्डा खाएगा.
So PIDDA. Peacock. Now second है plant and rabbit है, और rabbit को कौन खाएगा? Wolf खाएगा। और नंबर थर्ड में है algae और crane, तो यहाँ पे फिश आएगा। Now come to the question, what is environment? Environment क्या है? The air, water, soil, several living and non-living, all are around us. All these influence our lives and form the environment. So environment has two segments, living and non-living things. What is the difference between the predecessor and consumer? So you have to write here, predecessor, the living, those can make their own food, are called predecessor. Example, green plants make their own food, so they are called predecessor. Consumer, the living, those are dependent for their food on other living, are called consumers. So example है, animal are development dependent on plants or other animals, so they are called consumers. Living and non-living component of environment are dependent to each other. Explain. तो ये एक्सप्लेनेशन कर रखा है इसका। Plants and animals are living, air, water, soil, light, etc. are non-living things. Both together make the environment. Living are the two types, plants and the animals. The plants manufacture their food with non-living things, air, water, soil and light. Air behaviors gets their food. Omnivorous gets their food from plants, and carnivorous animals consume these herbivorous animals as their food. In this way, living and non-living are dependent to each other. So ये आपको देना आंसर. So it is easy. Now come to the next. So what is food chain? क्या है food chain? So what do you understand by a food chain? So you have to write answer. The whole process of food, who eats whom, is called food chain. So there are many food chains in nature. So you can see here example, insect eats grass, frog eats insects, and frogs are eaten by snakes, and which are in turn eaten by peacocks. What happens if rain is less in quantity? अगर बारिश कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? So answer है, if the rain becomes less in quantity, then the level of water in well and the ponds goes down. So due to transpiration process, water is also lost from the soil due to the soil becomes dry. So due to less rain, the lag by availability of the food production and to obtain food for animals is also difficult. Explain briefly. So air pollution हो गया, tree pollution और damage due to heavy rainfall. Water pollution, number ये conservation of food, forest and their wildlife. Number last है sound pollution. Now come to the answer. Air pollution. If you losing the drop of the air component, then what would it mean? You would have seen that the smoke emitted by vehicles gets into you and leads to irritate
in the eyes and a feeling of general discomfort. If at home also smoke accumulates, we do not feel comfortable. It is because this smoke contains many poisonous gases which pollute the air. Smoke from the factories also pollutes the air. Likewise, if there is too much dust in the atmosphere, so then also air becomes polluted and is harmful for living beings. Number second है water pollution. So water is essential for living beings. Can any living beings live without water? So just think what kind of water would be good for a living being, clean or polluted. आंसर है इसका ये चलिए आंसर वाटर फ्रॉम ड्रेन स्पेस एक्सेट्रा एंड आल्सो पॉइजनस water from the industry drains the river or ponds to make them dirty and polluted. Because of this, many living beings die and many human beings and river animals become sick. Sound pollution. Now we shall talk about a different type of pollution. Those of you who live in cities would have seen that the vehicles start playing on the road. Usually in the morning, the engine and the horns of these vehicles produce a lot of sound. If we are continuously exposed to high-pitched sounds, then our ability to hear is reduced, or even we can become deaf. Sound pollution also affects our health. So we become more irritable or irritable, which can lead to headache and other type of sickness. Number 4, tree plantation. ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए. Life of living organisms in the forest has become unsafe because of tree cuts. You have earlier learned about the food chain and absence of any one organism from the food chain breaks it. This leads to a imbalance in nature. To maintain a balance in nature, trees should not be cut and new tree pollution should be taken. Number 5 है conservation of forest and their wildlife. आंसर इसका है ये. Human beings are constantly trying to raise the standard of living to lead a comfortable life. We are destroying the environment and directly or indirectly harmful the forest and the wildlife. To protect the forest and the forest animals, यहाँ क्या है, sanctuaries and national parks have been made in our state. Only 4 national parks and the 10 sentence have been made. Number 6 point, damage due to heavy rainfalls. So due to heavy rainfall, the water levels in the river pond increases and the cause of flood. Floods directly affect the crops, animals and human beings. When the water level goes down after food, then it causes large number of diseases in human and affect the life of animals. Fifth question है, give the name of 2 herbivores and
कार्निवोरस एनिमल्स अराउंड इन आवर सराउंडिंग्स। तो पहले देखते हैं ये हार्बिवोरस कार्निवोरस। तो हार्बिवोरस में देखो कौन है, काव है और गोट है। इसमें क्या है आपका, कार्निवोरस में फ्रॉग को जो है डिफरेंस मिला था। So now frog and lizard. Okay. Now come to the sixth. Write the name of the birds and the snakes found in Chhattisgarh state. चलिए लिखते हैं आंसर। Birds found in CG ये है पहाड़ी मैना, कोयल, दूधराज, पीकॉक और बेंगुला। बेगुला जो है उसको बोलते हैं। स्नेक्स फाउंड इन सीजी कोबरा, करेट, पाइथन और धामा एक्सेट्रा। Write about the measurement taken for the protection of wild animals. So you have to write answer for security of the wild animal. Destructions of forests should be banned and the plantation should be increased. So number of sanctuaries and national gardens should have been increased. Question number 8. According to Buddha and the drivers of vehicles emitted black smoke should be changed. Currently, write your opinion, positive and negative with reason. So you have to write answer according to the Buddhism driver of the vehicle. Producing black smoke should be charged plenty because this black smoke pollutes the environment which affect the body on health. ये हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड वेस्ट। फूड वेस्ट जरूरी है आपको याद करना। ईच लिविंग कंज्यूमर्स मोर देन वन लिविंग एज अ फूड। इन दिस वे वन लिविंग रिमेन्स इन माई फूड चेन एंड विद दैट these food chain form a food web। web को बनाते हैं। What should happen if any of the link is missing in the food chain? So you have to write answer. If any of the link is missing in the food chain, so the balance in nature will be distributed. Example, suppose all the birds are destroyed, there would be a non-bird to eat the insects. Then all the insects would increase in number, so this large number of insects would in turn destroy and the crops. This would in turn affect human beings and the other animals which depends on the crops. Thus, distributing any part of the food chain would disturb the balance in the nature. Now come to the what is pollution. If any process which makes the air, water and the soil harmful to living beings is called pollution. So every day several crore tons of the harmful substances mix with air, water and soil, making the environment polluted. Now come to the next. What is the difference between the carnivorous and the omnivorous animals? Some animals eat only other animals. They are called carnivorous animals. Some animals eat both plants and animals. They are called omnivorous animals. What would happen if all carnivorous animals of the forest are destroyed? So you have to write answer. There are some animals, those are harmful to crops. Carnivorous animals consumes these animals as food. If all the carnivorous animals of forest would
destroy, then number of these harmful animals will increases, result in the finishing of the forest grass. After finishing the forest grass, they will start eating crops, and finally human being will not get grains. Make a list of substance present in nearby area. चलो देखते हैं, ये है डेड एनिमल्स, एयर है, वाटर है, सॉइल है और लाइट है। यहाँ देखिए क्या है, पी प्लांट है, मैंगो प्लांट है, व्हीट प्लांट है एंड पाइपल ट्री है। एनिमल्स में क्या है, क्रो है, रैबिट है, फोक्स है और टाइगर है। तो इतने से आपकी टेबल बन जाती है। नाउ राइट द नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फर्स्ट है हमारे पास फ्रूट, फ्रूट्स मीन्स क्या होता है, मीट होता है। सेकंड क्या है, वेजिटेबल, वेजिटेबल मीन्स एनिमल स्किन, स्किन की जो एनिमल्स है। नंबर 4 पे है मेडिसिन, मेडिसिन जो है वो मिल्क यूज करेंगे। और नंबर 5 है गम, गम जो है एग में यूज करते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही मिल गए। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं इसके साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। और वीडियो को समाप्त करने से पहले ये बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ मैं और इसके साथ साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।